Hello students, we now know how to evaluate double integration, okay? But sometimes we observe that it is not easier to evaluate when the equations are in Cartesian or when the function is in Cartesian. It better where the evaluation becomes quite easy or better when we convert the Cartesian into polar. Okay, so here in this video we will be seeing the transformation of Cartesian to polar coordinates and hence evaluating. So how do we do that? We can simply do that by substituting x and y as r cos theta and r sin theta are respectively. Okay, so our function f of xy will convert to f of r and theta, function r and theta. So as we are converting the function xy terms को हम replace कर रहे हैं r and theta से, simultaneously we would have to convert dx and dy dx into dy also. So dx dy is replaced as r dr d theta. Now how come this r? Now this r is obtained from the Jacobian value of xy with respect to r and theta. We all have studied Jacobian in M1. What is the definition of Jacobian? Suppose u and v are two functions which are dependent on x and y. Say u is equal to phi of xy and v is equal to phi of xy. U and v both are continuous and differentiable. Then we represent Jacobian as determinant of partial derivatives of u with respect to xy and v with respect to xy. Means ux and uy, vx and vy. Correct? Such way we had defined. So similarly here we will, by using the definition of Jacobian, I can write dx dy is equal to nothing but Jacobian into dr d theta. So what is this Jacobian? Jacobian is nothing but partial derivative of u xy with respect to r and theta, because your x and y are depending on r and theta. So इसकी value क्या होगी? When you evaluate this determinant, we get a value as r. Okay, and hence dx dy is replaced as r and r dr d theta. Means when you observe that some questions or some functions are not easily evaluated in Cartesian, try to convert it into polar and then evaluate. So accordingly equation अगर Cartesian में, that is double integral f of x by dx dy, xy को सब्स्टिट्यूट करना है r cos theta r sin theta respectively, and dx dy को सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा r dr d theta, and hence our function will get converted, integral will get converted into पोलर फॉर्म. नाउ अभी यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई के लिमिट्स फाइंड आउट करते थे, वैसे अभी पोलर में आर एंड थीटा के लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल सी सम बेसिक टर्म्स so that हमें आइडिया आ जाएगा कैसे आर एंड थीटा मिलता है. अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स. सो सपोज नाउ यू आर गिवन अ कंप्लीट सर्कल with center at origin and radius a. Suppose you are given x square plus y square equal to a square as a circle whose center is the origin and radius is a. So यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? एक रेडियल वेक्टर कंसिडर करेंगे, एंड वी विल मूव दिस रेडियल वेक्टर along the region. Now this whole circle is a bounded region. So रेडियल वेक्टर अभी r की रेंज क्या होगी? सिंस यह सर्कल है रेडियस a का, तो r की वैल्यू होगी 0 to a. करेक्ट? सो 0 to a तक जाएगा, और ये रेडियल वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 से चालू होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई तक पूरा सर्कुलर रोटेशन करेगा टू कवर द रीजन. सो हाउ विल थीटा वेरी? थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 pi. Means r की रेंज होगी 0 to a, थीटा की रेंज 0 to 2 pi, and hence our integral now gets converted from theta equal to 0 to 2 pi, r from 0 to a, f of r theta फंक्शन f of x y को रिप्लेस होगा f of r theta में, into dx dy को रिप्लेस होगा r dr d theta. Okay, suppose now you are given a semicircle with radius a, but above y equal to 0. means लाइन y इक्वल टू 0 मतलब अबव एक्स एक्सिस कंसिडर करना है. सो अबव एक्स एक्सिस का रीजन अगर कंसिडर करना है तो रेडियल वेक्टर कंसिडर होगा. Again radial vector r will range from 0 to a since the radius is a. And how will this radial vector vary? The radial vector will vary from theta equal to 0 up to this point, that is theta equal to pi. Means theta की range होगी 0 to pi, r की value 0 to a, f of r theta r dr d theta. Suppose you are asked to find positive quadrant. Positive quadrant means this type.
राइट. सो यहाँ पे आर अगेन रेंज आर की क्या होगी 0 to a एंड हाउ विल थीटा गो, थीटा विल गो फ्रॉम 0 to π/2. मतलब इंटीग्रल होगा थीटा फ्रॉम 0 to π/2, आर फ्रॉम 0 to a, एफ ऑफ आर थीटा आर डी आर डी थीटा. Next, suppose you are given a circle. Now here we are given a circle of the form x square plus y square equal to 2ax. Means actually this circle is x minus a whole square plus y minus 0 square equal to a square. Means it is a circle whose center is a comma 0 and radius is a point. Radius is a. अभी इसे convert करना है पोलर में. So obviously what we do in this equation also, हमने इक्वेशन में क्या किया था, इसमें सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स और वाई को आर थीटा आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करके हमें डायरेक्टली आर की वैल्यू मिल गई थी, राइट. आर इज इक्वल टू ए. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट हियर. सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू प्लस और माइनस ए ऐसे मिली थी हमें, राइट. इसलिए रेडियल वेक्टर ए था. सो सिमिलरली अभी यहाँ पे आर की वैल्यू ऑब्वियसली रेडियल वेक्टर वी कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. सो आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस सर्कल तक जा रहा है. तो इस सर्कल मतलब इस सर्कल की पोलर इक्वेशन क्या है, that we will obtain by substituting r cos theta and r sin theta in this equation. So when you substitute r cos theta and r sin theta, we get it as r square cos square plus r square sin square equal to 2ar cos theta. Means r की equation क्या मिल गई, 2a cos theta. Means how will r vary, r will vary from 0 to 2a cos theta. Now where does this region, this circle, how will this radial vector move? Radial vector anti-clockwise direction में move होता है. Means from this theta equal to minus π/2 to theta equal to π/2 वेरी होगा. ओके. मीन्स थीटा की रेंज होगी माइनस π/2 to π/2, आर की रेंज होगी 0 to 2a cos थीटा, एफ ऑफ आर थीटा एंड डी एक्स डी वाई रिप्लेसेस आर डी आर डी थीटा. वही अगर हाफ सर्कल के लिए पूछा गया, मीन्स द सर्कल अबाउ दिस एक्स एक्सिस, मीन्स रेडियल वेक्टर कहाँ से जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2 तक जाएगा. मीन्स थीटा की रेंज सिर्फ चेंज होगी, आर की रेंज वही रहेगी. और सपोज नाउ यू हैव गिवन अ सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay. ये सर्कल कहाँ पे लाई होगा, इट विल लाई ऑन y एक्सिस. सेंटर क्या होगा 0 to a, right. इस इक्वेशन गिवन एज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a. मीन्स सेंटर 0, a एंड रेडियस a. मीन्स ये सर्कल ऐसे होगा, राइट. अगेन फॉर रेडियल फॉर टू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ r, we substitute r cos theta and r sin theta and get the value of r. So r यहाँ पे क्या है 2a sin theta. Means r radial vector varies from 0 to 2a sin theta. And how will this radial vector move in anti-clockwise? In anti-clockwise मतलब theta equal to 0 से इस तक आ जाएगा, means theta equal to pi तक. So theta will vary from 0 to pi, 0 to 2a cos theta, f of r theta, r dr d theta. Suppose you are given a car diode. We all know how to trace a car diode. We have seen in curve tracing term. Okay. Suppose you are given a car diode equation AR equal to A1 plus cos theta. तो कैसा, how is this car diode? This car diode lies on the positive side of the x-axis, right? This is your car diode term. Okay. Ranges from 0 to 2a, 0 to π/2 तक ये कहाँ पे तक जाता है, 0, a तक जाता है. इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है, राइट. सो how r ranges, r is already given. This is now already a polar equation. So r will range from 0 to a times 1 plus cos theta. And how will this radial vector move now? अभी ये पूरा सर्कुलर पोर्शन कवर होता है. मीन्स क्या होता है, it will start from 0, it will go towards π/2, it will go towards pi, then 3π/2 and then 2pi, right. Means r theta will range from 0 to 2pi. You can also consider up to the half part and multiply 2 times. Means सिर्फ upper half part के लिए consider करो 0 to π/2 तक, and twice the value will give you the required value of the whole car diode. Okay. So that way also you can formulate. So integral क्या लिख सकते हो, 0 to 2pi, 0 to a times 1 plus cos theta, or 2 times 0 to pi, 0 to a times 1 plus cos theta. Suppose you are given a car diode as r equal to a times 1 minus cos theta. 1 minus cos theta मतलब नेगेटिव साइड पे आता है. So here r ranges from 0 to a times 1 minus cos theta.
अगेन थीटा विल वेरी फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज कवर करके थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पाई तक आ जाएगा. मीन्स थीटा विल रेंज फ्रॉम 0 to 2 pi, r will range from 0 to 0 to a times 1 minus cos theta. Suppose you are asked to find for Bernoulli's lemniscate. Bernoulli's lemniscate is given by the equation r square equal to a square cos 2 theta, a polar equation. Okay, how do we draw it? It lies between, it is symmetrical to both x and y axis. It is symmetrical, right? It is symmetrical to the initial line, symmetrical to the pole. This is your initial line, theta equal to 0. This theta equal to pi by 2 is your pole, right? Perpendicular line to the pole. So it is symmetrical to both initial line as well as the symmetrical line, right? Perpendicular line through the pole. So अभी इसमें if you are asked to find for one loop मतलब ये loop r की रेंज कहाँ से जाएगी? 0 to, from this equation I can get r as a times root cos 2 theta. And how will r vary? It will vary within this quadrant, within this two angles, that is minus pi by 4 to pi by 4. मीन्स थीटा की रेंज कहाँ से होगी? minus pi by 4 to pi by 4 में, right? This is for one loop. If you have r asked for two loops, just multiply by 2, you will get a value for both the loops. Okay, so this were some basic terms we seen here. So what are the steps you have to follow while you have to convert, while you have to transform into polar equation? Polar equation में first thing, draw the region and check the actual region which is bounded from the given limits. You will be given equation in Cartesian form, give limits in Cartesian. Use those equation, use those values and draw the region. Okay, now in the region which you have obtained, consider a radial vector. उस radial vector में के से क्या मिलेगा? हमें radial vector की range मिलेगी. Okay, so, and then move this radial vector or radius vector so that we know how theta varies, and this will give us the limits of r and theta. Replace the terms x, y, dx, dy in the equation by r cos theta, r sin theta and dr, r, dr, d theta respectively, and evaluate to get the solution. Okay, so let us see an example here. Evaluate what is given to you. Evaluate integral 0 to 2 integral 0 to root 2x minus x square, and the function given as x upon root x square plus y square 2x dx dy. Okay, now if you look at the limits, these limits are a bit complicated. 2x minus x square है, x upon root x square plus y square है, कुछ common निकालना है, तो it will be not that easier part. So what do? We try by converting into polar. So first step क्या कहता है? Take down the limits and draw the region bounded. So what are the given limits? From this limits, what are the values we have? Since these are function of x, obviously these are values of y, and बाहर के values किसके है? x के है, right? So हमारे पास x is equal to 0 line है, x equal to 2 line है. Then we have y equal to 0 and y equal to root 2x minus x square. Means this is nothing but a circle. Circle y x square plus y square equal to 2x, that is nothing but x minus 1 whole square plus y minus 0 whole square equal to 1. A circle with center 1, 0 and radius 1. So ultimately what do we have? We have a circle whose center is lying at 1, 0, radius is 1. We have lines x equal to 0, y equal to 0 and x equal to 2. Okay, what are the points of intersection? वो भी तो दिखना होगा. Point of intersection obviously x0 y0 है, x2 y net 0 means 0, 0 and 2, 0 यही point of intersection है. So what will be the region bounded if we draw the graph? If you observe, this is a circle from 1 with whose center is 1, 0 and radius is 1. Okay, then this is a line x equal to 0, this is line x equal to 2 and y equal to 0. मीन्स इसमें बाउंडेड होने वाला मतलब ये शेडेड रीजन होगा जो हमें यूज करना है. ओके, सो ये शेडेड रीजन हो गया. सो व्हाट डू वी नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टेप सेज? कंसिडर अ रेडियस वेक्टर एंड मूव दिस रेडियस वेक्टर टू नो हाउ द थीटा वेरीज. तो रेडियस वेक्टर कंसिडर करोगे तो कैसे होगा रेडियस वेक्टर? You will consider a radial vector like this.
Okay, so how does theta vary, how does r vary? R will vary from this to this line. So what is the value of r here? वो value of r हमें इस equation में substitute करने पर मिलेगा. क्या मिलेगा वो equation? देखो, if I substitute r cos theta and r sin theta, ये हो जाएगा r square cos square plus r square sin square equal to 2r cos theta. cos square plus sin square 1 देगा, मतलब रहेगा r square equal to 2r cos theta, means ultimately it is r equal to r 2 cos theta. Means how does the radial vector vary? This radial vector will vary from 0 to r equal to 2 cos theta. Okay, and how this radial vector move in anti-clockwise direction? So start का असर है यहाँ से theta equal to 0 to theta equal to pi by 2. So theta varies from 0 to pi by 2. Means we know the limits now. R varies from 2 cos 0 to 2 cos theta. Theta varies from 0 to pi by 2. Okay. Simultaneously, now we know the limits. Now substitute the using this limit. Put x and y. Replace x and y in r and cos r and theta form. Means the equation क्या हो जाएगी? Theta goes from 0 to pi by 2. R goes from 0 to 2 cos theta. What is the equation we have? We have x upon root x square plus y square. X square plus y square is nothing but r square. Means ये होगा x, that is r cos theta upon r square dr d theta. Evaluating, now we will first evaluate with respect to r and then with respect to theta. Why? Because if you observe here r के limits में theta exist करता है. Okay, so better रहेगा पहले r को evaluate करना and then theta को. So obviously this cos theta will be considered as a constant term. Take it outside the integration. रहेगा क्या r, ये root r square मतलब r cancel हो जाएगा, रहेगा सिर्फ एक r term. So r की integration r square by 2 within the limit 0 to 2 cos theta. So ये हो जाएगा 4 cos square theta, taking half common. Evaluating this, now we observe this is integral 0 to pi by 2 cos cube theta d theta. Now do we need to split this cos cube into cos 3 theta equation and then solve? No need. We already know reduction formulas. We have seen reduction formula for cos raised to n, sin raised to n. So वही reduction formula यहाँ पे use करना है और solve करना है. So by reduction formula, n की वैल्यू 3 है, सो n माइनस 1 अपॉन n इंटू सो ऑन. दिस इज ऑड, मतलब लास्ट वैल्यू 1 रहेगी. मीन्स वैल्यू क्या होगी? 2/3. सो 2 into 2/3 विल गिव अस द वैल्यू 4/3. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, लेट अस सी वन मोर नाउ. नाउ नेक्स्ट इज evaluate integral over r x square y square upon x square plus y square dx dy, where r is annulus between x square plus y square equal to 4 and x square plus y square equal to 9. Annulus is nothing but a region between two circles. Okay, imagine a donut. ओके, सो वो डोनट जो पार्ट है वो क्या है? एन्यूलस है. सो यहाँ पे दो सर्कल्स दिए तुम्हें, एक का सेंटर है, दोनों का सेंटर सॉरी ओरिजिन है, एक की रेडियस है 2 और दूसरी की रेडियस है 3. सो वी ऑलरेडी नो द लिमिट्स. वी हैव टू सर्कल्स विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2 and 3 रिस्पेक्टिवली. सो अभी हम लोग ये ड्रॉ करेंगे. सो व्हेन वी ड्रॉ दिस सर्कल्स, सो दिस region between these two circles is the annulus region. For this region we have to find the, also we have to evaluate the given function within this region. अभी क्या करना है? फिर से consider a radial vector. So radial vector अभी यहाँ से ऐसे जाएगा, but actually ये radial vector actually bounded between the region के लिए radial vector कहाँ से जा रहा है? यहाँ पे r की वैल्यू है 2 and r की वैल्यू है 3. So we have to actually find between 2 and the value between r equal to 2 and r equal to 3. Means r की range कहाँ से चाहिए? r equal to 2, r equal to 3. And we have to find for the whole region. So how will theta vary? Theta will start from 0 to pi by 2, pi, 3 pi by 2, covering all the area up to theta equal to 2 pi. Right? So हमारी theta की range क्या होगी? 0 to 2 pi. So we know what is the range of r, we know what is the range of theta. So now next क्या करोगे? Substituting limits तो मिल गए, x है and y को यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, r cos theta r sin theta, ds dy को रिप्लेस करना है r dr d theta से. मीन्स क्या मिलेगी ये इक्वेशन? This will be equation as theta equal to 0 to 2 pi, r ranges from 2 to 3
r square cos square theta, r square sin square theta upon, now this is what, x square plus y square term. So x square plus y square की वैल्यू क्या होती है, r square होती है, राइट. सो r square से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा r इंटू r dr d theta. अगेन now if you want you can evaluate both the terms separately because r separate है, theta separate है, r is not a function of theta. यहाँ पे लिमिट्स में theta नहीं है, ये तो constant है, ये भी constant है, and you can separate up the terms. So you can separately solve both the integrals and get the value. So I take sin square cos square outside this integration, तो ये होगा इंटीग्रल 0 to 2 pi d theta into integral 2 to 3 r cube dr. So if you observe this is easier to solve. इसकी वैल्यू क्या होगी, r raised to 4 upon 4 within the range 2 by 3. अभी इस इंटीग्रल को if you observe now, if you remember the reduction formula where we have seen integral 0 to 2 pi sin raised to mx into cos raised to nx dx. Okay, we have seen a formula for this term. Now this formula 2 pi के लिए range कहाँ पे होता है, चेकिंग इफ बोथ द इवन है, पावर्स क्या है उस पे. सो यहाँ पे बोथ हैव इवन पावर, सो आई कैन राइट इट एज 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू mx that is sin square into cos square theta, and by the formula we get the value as m minus 1 n minus 1 and so on. तो m minus 1 यहाँ पे होगा 1, n minus क्या होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है m प्लस n एंड देन डिक्रीजिंग बाय 2. तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 2 4, डिक्रीज इट बाय 2 2, आगे तो डिक्रीज नहीं कर सकते, स्टॉप हियर, इनटू पाई बाय 2 बिकॉज बोथ आर इवन. सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बाय 8 इंटू पाई बाय 2 एंड इसकी वैल्यू सम r raised to 4 upon 4 between 2 to 3. Evaluating this gives the value 65 pi by 16. Okay, so such way we will evaluate and get the values.